Hi everyone. So this is the lecture number 7 for the chapter Laws of Motion. In the previous lecture, we discussed about the two types of friction, that is static friction and kinetic friction. And we discussed this uh, concept by saying that there was a block kept on a horizontal surface and some external force capital F is applied to that block, and we initially start by applying a very small magnitude of force so that the block doesn't move, and then we keep on increasing that value, that magnitude of F. And so the initially when the box is not moving, the static friction would be acting because it is the friction that opposes the impending motion. And when when the value of static friction, it crosses a limiting value, it exceeds the limiting value, then the block will start moving because then the kinetic friction is acting at that time. So let's move on to the next topic. Today we are going to discuss about the rolling friction and the circular motion. So what is rolling friction? So first we will discuss the ideal case. So ideally, when a circular body which is rolling without slipping over a horizontal plane, suffers no friction. Why? Because see, this is a circular body. This is suppose this is a circular wheel and it's rolling, simply rolling. It's not slipping. Slipping means it's not moving ahead or moving back. It's simply rolling at its own position. So, in that case, what happens is in the ideal condition, see, this is the point of contact. So the single point of contact is there, and so there is no relative motion happening here. So we have studied before that we have discussed it properly that the friction only opposes the relative motion when the when the two surfaces they are relatively moving. In this case, this point of contact is always constant, like it always fixed at one point. No, it is not moving with respect to the surface. That is why, as per what we discussed, there should be no friction. So if no relative motion is there, no friction would be there, and so this objects, this wheel, it should keep on rolling with the constant velocity. Okay. So this is the ideal case. So let me write it down. No friction, and so rolling continues at constant velocity. Okay. So this is the ideal case. But again, like if we do it practically, if we this will not happen. We will observe that it does not happen, and gradually it will come to rest. This wheel will stop rotating. Why does this happen? We have already discussed it when we were discussing this frictional force. That introductory class, you must remember that some external force will be needed to maintain this motion because of the resistance to motion called the rolling friction. So practically if we observe it, we will need some kind of external force for the motion to continue. And if we will remove that external force, then this wheel will stop rolling. So that simple that friction, that external force is basically because of the resistance to motion known as the rolling friction. Now you must remember one thing, that the magnitude of rolling friction is much smaller than the static or the sliding friction that we discussed in the previous lecture. The magnitude of rolling friction is very much less than the static friction. As an example to this expression or this statement, like imagine that one horizontal surface is there and a heavy object is kept on that surface, and this is the person, and he is just pulling this horizontal surface. You can call it a plane, or you can call it a plate, whatever you want. So this person is pulling this horizontal plate,
and this is the surface. Okay. And imagine another situation in which this block is not kept on a plate, but it is kept like you can imagine that this is the same plate, this is the block, but now you have used the wheels over here, and now another person is pulling this cart. So if you imagine these two situations, what will you observe? You will observe that for the first case, you will need a lot more force to pull that horizontal plate or a plane. And in the second one, in which wheels are there, so you will need a very much like very lesser amount of force, lesser magnitude of force to pull this cart. So this observation or this experiment will simply tell you, will clearly tell you that rolling friction is less than static friction, because in the first case, the static friction is acting, or kinetic friction, whatever the situation may be. And but in the second case, you will see, because there are wheels, no, there are wheels, so rolling friction would be there. That means rolling friction is less than the static friction, and so you will need lesser amount of force, lesser amount of external force would be required to cancel that rolling friction. Okay, so this was a simple example. Then actually what happens is, see, we discussed that there is one point of contact, but this is the ideal condition. Actually, this is not there. In the practical case, this surface, the surface which is in contact, it deforms. Okay, so this surface, the area of the wheel which is in contact with the surface, the horizontal surface, that is not purely circular. Okay, so it deforms. So there is momentarily deformation of the surfaces which are in contact, and therefore, as we discussed, that initially it was one point of contact, and now we have a finite area in contact because of this deformation thing. So now if some area is in contact, so obviously there will be some relative motion, and so some kind of friction. It comes into play, and that is the cause of this rolling friction. So this deformation is the cause of this rolling friction in practical cases. Okay. So you must remember that why actually this does this come from, and the rolling friction is less than static friction. This is the only reason that the invention of wheels was a very big invention at that time. Only because the people, they were at that time, the people, they actually when they needed to carry the large amount of goods from one place to another for trading purposes and all. So this invention of wheel was a very big thing for them. It was a very big advantage for them. So this was all for the rolling friction. Now see, this friction, we have discussed three types now: the static one, the kinetic, and the rolling friction. So, so friction is actually, it has both the negative, like it has both the pros and cons. The negative role of friction, the biggest disadvantage of friction is observed in the cases of machines. Because see, when big machines are there, no, so they have moving parts. Not all machines, but yeah, most of them, they will have some kind of moving parts. And if the moving parts, they are rubbing each other, so the friction will oppose the relative motion. And so friction will act, and so it will dissipate power in the form of heat. तो तभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मशीन काफी टाइम तक चल रही है और अगर आप उसको टच करते हो, अगर कोई मूविंग पार्ट है और उसके आसपास आप टच करते हो, तो वो पोर्शन, वो एरिया जो होता है वो गर्म लगता है. इट इज ओनली बिकॉज ये जो फ्रिक्शन की वजह से पावर डिसिपेट हो रहा होता है, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये सबसे, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. एंड सो लॉट मच मोर पावर, लाइक नॉर्मल पावर जितना चाहिए होता है उससे ज़्यादा पावर लगता है मशीन को चलाने के लिए. So there are certain ways which the people, they have used to reduce this amount of friction in the machines and in the industries. So let me explain you these ways how to reduce friction, dissipation of power in form of heat. Okay, ways to reduce friction
friction that are generally used. The first one is lubrication. Lubrication is we have certain special kinds of like they are not oils, but yeah, they are kind of oil like they can be they are made up of they are special chemicals that are used as lubricants. And like imagine that you have spilled a lot of oil on the floor. So when you will when you will walk on the floor, you will feel like if you are not careful enough, then you can easily slip down. You can easily slip and fall down. Okay. So this is the reason because why? Because you are walking, no? Why you are how you are you walking? If friction would not be there, then you would have fallen down. Because of friction, because of friction only, you are able to walk on the floor properly. So that is when you pour the lubricants between the machine parts. So what happens is the friction is reduced. And so when the friction is reduced, the power dissipation is also reduced in the form of heat, and then you will require less amount of power to operate that machine. Okay. So then the second is using the ball bearings between the moving parts of the machine. So see, suppose there are two discs in a machine, or you can say two spheres are there, whatever. Okay. And normally, see, different types of ball bearings are used in the different kinds of machines. These are very small bearings are there. Suppose one moving part is this and one moving part is this. Okay. So when you use a ball bearing over here, or you have two like this, and you use one here and one here. So what does happen? What actually happens here is, if ball bearings were not there, then the the kinetic friction would be generated, right? Because the two parts are moving and they are rubbing each other, so kinetic friction would generate. But because of the use of ball bearings, the rolling friction will generate. Okay. So the rolling friction will come into play, and you know that rolling friction is always less in magnitude as compared to the static friction. So that means कि friction तो होगा, मतलब friction को खत्म करना, that we have already discussed that it is impossible to completely eliminate frictional force anywhere. So friction को बिल्कुल खत्म करना is not possible, yeah, but we can try to reduce it. ठीक है, तो हम lubrication में क्या करते हैं कि type of friction same है, but we are just reducing the magnitude. In the case of ball bearings हम लोग क्या कर रहे हैं कि static friction से हम लोग के बजाय अब rolling friction लगेगा. Ball bearings में वो जब roll करेंगे तो rolling friction लगेगा, and the value of rolling friction, the magnitude is lesser. इसी वजह से the dissipation of power will be lesser, and will require the machines will require lesser power to operate. Okay, so ball bearings, and the third one is maintaining thin cushion of air between the surfaces. मतलब जो भी दो surfaces जो हैं वो आपस में rub हो रहे हैं, जो भी दो moving surfaces हैं, उनके बीच में कोई thin cushion of air, मतलब thin layer of air बोल सकते हैं. Thin layer of air if it is present between the moving parts, then the power dissipation is less. Now this was a negative effect of friction because in most of the cases it has to be like it is undesirable, but obviously there are some positive uh, effects also, or you can say positive role. The kinetic friction is mainly used for quickly stopping the relative motion. मतलब अगर हमें मान लो इंस्टेंटेनियसली relative motion को stop करना है तो कैसे stop करेंगे? तो we can use this concept of kinetic friction. So this concept is generally used in the brakes of the automobiles. And then there's the another one, that's the static friction. So this is the friction that we use while we are walking. We have already discussed this. There is no need to discuss it again and again. That when we are walking, we are able to walk because of friction only. If friction would not be there, we would have slipped and fallen down. Okay. So the vehicles also they need friction to get accelerated, no? Because this is the only frictional force is the only that is providing the acceleration to the vehicles.
So these were the negative and the positive roles of friction. Now we'll move on to the circular motion because so now we'll come to circular motion. So while like in the previous chapter we discussed that the acceleration of the body moving in a circle of radius r with a uniform speed v is v square by r, and that is directed towards the center of that circle. So like if this is the circular path and the body is moving on the circular path, so we have seen that the velocity vector is not constant because the even if the magnitude of the velocity is constant, but the direction is not. And similarly, the acceleration also. The magnitude is constant, but the direction is not. So the velocity is always directed towards the tangent. Like if suppose if the object is here, and so the velocity will be always towards the tangent at that point, and acceleration will always be towards the center of the circle. So this is the acceleration and this is the velocity. Okay. So and the magnitude of this acceleration we derive it to be v square by r. R is the radius of the circle. Now the centripetal force is also directed towards the center, and that centripetal force, let it be Fc, it will be m into a, that is mv square by r. So there are different ways the centripetal force is there in the body. I mean, there are different other types of forces that provide this centripetal force so that the body will move in a circular motion. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप से नहीं आता है कभी भी, ठीक है। तो अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में तो कहीं ना कहीं से वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ स्टोन and rotate it in a circle by a string, like we tie that we tie that stone from one end of the string and the other end we hold the other end of the string and then we rotate it in a circular motion. So at that time the centripetal force कहाँ से आएगा? It will come from the tension in the string. So the tension will provide the centripetal force. Similarly, when a planet is moving around the sun, the centripetal force is provided by the gravitational force. If a car is taking a circular turn, suppose some circular turn is there, this is a circular, like this is a road and कुछ circular turn आया, कुछ इसका radius होगा turn का, कार इस circular turn पे move कर रही है, तो कैसे move कर रही है? I mean, इस केस में centripetal force कहाँ से आएगा? It is provided by the friction, because कोई और force तो है नहीं जिसकी वजह से centripetal force मतलब कार जो है वो actual में turn ले पाएगी. So that's here in this case it's the friction. Okay. So then we'll discuss two cases, that is the motion of a car on a level road and then on a banked road. So in both these cases the car is turning like the car is taking a circular turn, मतलब वो सीधा मूव नहीं कर रही है, सीधा मूव कर रही होगी तो हम सर्कुलर मोशन क्यों कर रहे हैं? We are considering here that the car is moving, that is taking a circular turn on the road. So here the first case is on a level road. Okay, लेवल रोड मतलब जो रोड है वो नॉर्मल रोड है जैसे ये हमारे यहाँ पे होते हैं। तो सपोज ये है हमारा सर्कुलर टर्न, ये हमारी कार है एंड दैट्स मूविंग हियर, इट इज टेकिंग अ टर्न नाउ। सो हम लोग क्या सबसे पहले क्या करते हैं, वी ट्राई टू see what forces are acting on that body and then we try to equate those forces. तो यहाँ पे क्या क्या लग रहा है? The forces which are acting on this body, they are, first one is, सबसे पहले तो वेट लगेगा ऑलवेज, देन दूसरा लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा लगेगा क्योंकि वो मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ओके, सो नाउ इन द like in the vertical direction we want to equate, if we want to equate the forces because there is no acceleration in the vertical direction, so we can say ये डायग्राम जो है ये ऊपर से देख रहे हैं हम कार को, ठीक है। अभी ये हमारी कार है, इसमें mg नीचे लगेगा
नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है, सो एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑल्सो, सो दैट मीन्स कि एन शुड बी इक्वल टू एम जी। नाउ ये जो कार है ये सर्कुलर टर्न ले रही है, सो इसलिए सम सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन एंड दैट इज प्रोवाइडेड हियर बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स along the surface in contact, and here it is frictional force क्योंकि और कोई contact force नहीं है, ठीक है, along the horizontal surface। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो कैसे लगेगा, सी अब दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को इमेजिन करना कि या तो फ्रिक्शन मतलब कार, अगर मान लो ये हमारी कार है ना, ट्रक है मान लो, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एक फ्रिक्शन तो लगेगा जो कि ऐसे लगेगा पीछे की तरफ, हम लोग इसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। ट्रक ऐसे जा रहे हैं आगे की तरफ, एक्सेलरेशन है इसका, एंड सो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम जिसकी बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, वो ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है ना, ये तो सामने वाला एक्सेलरेशन है ना, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन जिससे कि वो सामने जा रहा है। हम उस मोमेंट की बात करें व्हेन द कार और ट्रक इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, तो हम इस एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, और ना ही हम इस काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जब कार ऐसे टर्न ले रही है ना, तो इसमें जो सर्कुलर मोशन वाला एक्सेलरेशन लगेगा ना, एसी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और क्यों लगेगा, क्योंकि कोई भी बॉडी इफ इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इफ इट्स moving in a cir- moving in a if it's in a circular motion, then it will always try to go outwards। वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, मतलब बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स जो कि उसको सर्कुलर मोशन में लेके आएगा, अदरवाइज वो बाहर की तरफ फ्लाई अवे कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो बॉडी की टेंडेंसी है, जो कार की टेंडेंसी है वो बाहर जाने की है, मतलब ऐसे जाने की है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो भी अंदर की तरफ होगा, लाइक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही कार को सर्कुलर मोशन में रखेगा। दैट मीन्स हम जिस हम जिस फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो ये वाला फ्रिक्शन है जो इस डायरेक्शन में लगेगा। हम ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जो बॉडी अगर आगे की कार अगर आगे आगे जा रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो क्यों, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी बाहर जाने की है, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर की तरफ नहीं जाएगी, इसीलिए दैट्स अ काइंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक नहीं है, काइनेटिक यहाँ पे लग रहा है, नीचे वाले फिगर में। ऊपर वाले फिगर में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी तो है बाहर जाने की, लेकिन वो जा नहीं रही है, बिकॉज ऑफ ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है ना। अगर ज्यादा हो जाएगा यही वाला फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ज्यादा हो गया मान लो अपनी लिमिट से, तो द बॉडी विल बाहर की तरफ चली जाएगी, और उस कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है, बॉडी स्लिप कर जाती है। जब व्हीकल स्लिप कर जाते हैं, बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि जो इफ अगर व्हीकल्स की बहुत ज्यादा स्पीड पे टर्न ले लेते हैं, तो वो बाहर की तरफ, वो दूसरे साइड पे स्लिप हो जाते हैं। सो दिस इज ओनली द रीजन, ठीक है। तो जब तक बॉडी स्लिप नहीं हो रही है तब तक बाहर की तरफ एफ एस लगेगा। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन से फोर्सेस और कौन सी एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे द की पॉइंट इज static friction provides the centripetal acceleration here, okay। so again यहाँ पे जो F होगा हमारा कितना होता है, mv square by r in the case of circular motion। एंड स्टैटिक जो हमारा लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था वो क्या बोलता था कि जो हमारा एफ एस होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन दैट बॉडी, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये वाला चीज।
और यहाँ पे जो हमारा F है वो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो ये है, ठीक है। नाउ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा S है। सो mv² by r शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, और v² शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। क्या है हमारा इस केस में? कार के केस में जो एन है वो सिंपली एम जी है, अभी हमने ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय एम ऊपर आर। एम एम गॉट कैंसल्ड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद v इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। ओके, तो ये कंडीशन आया वेलोसिटी का कि वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। अब देखिए म्यू एस क्या है? म्यू एस हैज टू बी अ कांस्टेंट, क्योंकि रोड का मतलब जो भी मटेरियल, रोड का जो मटेरियल है और जो कार के टायर का मटेरियल है, इनके बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट इज अ कांस्टेंट। r is the radius of that circular turn and g is the acceleration due to gravity. So all these three are constant. तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए, ये कंडीशन क्या बोल रही है? अगर सिंपली बहुत सबसे सिंपल टर्म्स में बोलें कि जो व्हेन any body, like when any car or a truck is taking a circular turn, then its velocity should always be less than or equal to this value, ठीक है, तभी वो सर्कुलर टर्न ले पाएगा। अदरवाइज इफ द वेलोसिटी becomes greater than this value, then it will slip. slip मतलब बाहर की तरफ चला जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। So this is the condition for the body to actually properly take a circular turn and avoid slipping. Okay. So generally, if we talk about V maximum is कितनी velocity maximum होनी चाहिए vehicles की ताकि accidents ना हो, that is mu s r g, right? Okay. So this was for the motion of a car on a level road, जब हमारी road जो है actual में horizontal है। Now the second case is the motion of a car on a banked road. Okay. अब banked road का क्या मतलब होता है? सी banked road is जो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, वो tilted road होती है, ठीक है। तो tilted road is let me just draw it. ये थीटा है और सपोज ये कार है, ठीक है, एंड द कार इज मूविंग इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। समझ रहे हो? ये ऐसा ये इंक्लाइन प्लेन नहीं बनाया मैंने कि मतलब इंक्लाइन प्लेन वाले केस में क्या होता है कि जब बॉडी इज मूविंग ऐसे, मतलब द बॉडी नीचे जा रही होती है ऐसे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आइदर द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स यू, मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर और इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो या तो अंदर के मतलब कार ऐसे ऐसे मूव कर रही है सर्कुलर, तो ये जो रोड है एक्चुअल में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये सर्कुलर रोड ही है, ऐसा रोड है। बट इसका जो ये सरफेस है ना, ये हॉरिजॉन्टल ना होके ये ऐसा टेढ़ा है, इट इज बैंक्ड एट सम एंगल। ओके, so this is a banked road. So again we will start off by first seeing what kind of forces are acting on this body. तो सबसे पहले क्या करना है? mg लगाना है हमेशा, दिस इज mg। दोबारा क्या करना है? दूसरा स्टेप, नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface. So some students they always have a notion that normal reaction is opposite to the weight of the body, that's opposite to mg. So वो लोग बिल्कुल opposite बना देंगे n को, but this is not the case. Normal reaction is a kind of contact force, ठीक है। तो अगर हमारा surface horizontal है तब तो that is equal to mg, that is always opposite to mg, but generalize करेंगे तो n is always perpendicular to the surface. So this is a normal reaction. बॉडी जो है क्योंकि जो यहाँ का जो इसका सेंटर है वो इस साइड पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब हम मान लो अगर ये सेंटर है यहाँ पे, तो हम इस पोर्शन ऑफ रोड के बारे में बात करें, यहाँ पे इस पोर्शन ऑफ रोड के बारे में, राइट। ये सेंटर है, इधर की तरफ हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा
ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा क्योंकि सेंटर ये है। ठीक है, उसके हिसाब से बॉडी को बाहर की तरफ जाना चाहिए, बट बॉडी बाहर की तरफ नहीं जाएगी, उसकी टेंडेंसी बाहर की है तरफ जाने की है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो दिस इज एफ एस। ओके, तो कौन कौन से फोर्सेस हो गए हमारे पास? एम जी हो गया, एन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और ये वाला जो एक्सेलरेशन वाला एम ए है जो नेट फोर्स है वो हो गया। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर बनाने के लिए लेट्स जस्ट when we'll break these forces, all these forces in the x and the y direction. Okay, x and the y components. So suppose ये हमारा x और y प्लेन है। ठीक है, इजी हो जाएगा विजुअलाइज करने में और कुछ नहीं। तो जब खूब सारे फोर्सेस होते हैं ना किसी भी बॉडी पे, और दे आर नॉट इन एक्चुअल, लाइक दे कैन बी इन एनी डायरेक्शन, नो, एंड सो देन व्हेन द फोर्सेस आर देयर एट सम एंगल्स, so it's the best way is to just make a separate diagram and break these forces into their x and y components and then equate the x and the y forces. So let's see what happens is here n. So suppose this is the normal reaction. See, if this is theta, so this angle must also be theta. Okay, so this is normal reaction. So if this is theta, then this component will be n cos theta, and this component would be n sin theta. Now another one is mg. Okay, then another one is friction fs. fs अच्छा theta, so this is fs. Now this is theta. वो ज्योमेट्री से आप लोग कर सकते हैं खुद ही ट्रायंगल बना के कि कौन सा वाला एंगल थीटा है और कौन सा 90 माइनस थीटा है, सो यू कैन फाइंड इट आउट इजीली. इफ दिस इज fs, then again this in this direction fs cos theta, and in this direction fs sin theta. ओके, सो हमने n को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया एंड हमने fs को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू इज वर्टिकल, लाइक दिस इन दी y डायरेक्शन, अगर हम y डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करते हैं तो सी n cos थीटा ऊपर लग रहा है, mg और fs sin थीटा नीचे लग रहा है, क्योंकि क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसी वजह से हम इसको इक्वेट करेंगे सिंपली, कुछ और नहीं करना है इसमें. इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा. ओके, इन द x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जीरो हियर. यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है ना x डायरेक्शन में, और वो एक्सेलरेशन कितना है, v स्क्वायर बाय r. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वो इस डायरेक्शन में है तो n sin थीटा पहले आएगा, एफ एस कॉस थीटा भी इधर ही आएगा, और ओके, तो n sin थीटा प्लस कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर. ओके, सो कुछ नहीं किया है, इसको बस एक बार आप फिगर देख लीजिए. इन द वाई डायरेक्शन में एन कॉस थीटा वाज अप वर्टिकली अपवर्ड्स, और एम जी और एफ एस साइन थीटा नीचे, तो इन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू दिस वन. ओके, इन द एक्स डायरेक्शन बिकॉज एक्सेलरेशन इज देयर, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए एम ए जो हमारा नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, एम इंटू ए होता है, दैट इज एम ई स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल टू एन साइन थीटा जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और एफ एस कॉस थीटा, इनको इक्वेट कर दिया. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू इज, बिकॉज हमें लिमिटिंग केस के बारे में बात करना है, राइट, वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वी, है ना, हमें मैक्सिमम वी निकालना है जिससे कि बॉडी स्लिप ना हो टर्न लेते टाइम. तो वी मैक्सिमम निकालने के लिए वी विल टेक द लिमिटिंग कंडीशन. एक्चुअल में होता क्या है कि सी एफ एस इज ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल टू म्यू एस एन. जब हम लोग इसका लिमिटिंग केस रखेंगे तो एफ एस शुड बी इक्वल टू म्यू एस into n. So what we will do is simply we will put this value in both these equations. ठीक है, so in the first equation when we will put this value, what we will get, n cos theta mg plus mu s n
साइन थीटा, ये पहली इक्वेशन में हम लोगों ने डाला है ये यहाँ से। ओके, और जब सेकंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही पुट कर देंगे, एफ की जगह पे म्यू एस एन। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू इज वी विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस, क्योंकि अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बच रही है, एक ये बच रही है। नाउ व्हाट आर द वेरिएबल्स? एम वी नो, जी वी नो, म्यू एस भी इज मतलब एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं हमेशा। थीटा भी कांस्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बैंकिंग एंगल है वो कौन सा है, कितना है। नाउ हियर देयर आर टू वेरिएबल्स, दिस वेलोसिटी एंड एन। ठीक है, सो व्हाट वी नो इज देयर आर टू इक्वेशंस एंड देयर आर टू वेरिएबल्स, मतलब n is the variable and v is the variable. Okay, so we can calculate the values. So what we will do is we will eliminate n. How? हम लोग पहली इक्वेशन से n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, सो ओके, सो जस्ट लेट मी erase this part so that ओके, सो हम लोग ने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन से हमने n का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला? n cos थीटा माइनस म्यू एस n sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया mg म्यू एस sin theta. Okay, now we will put this value of n in the second equation, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी तो है नहीं, हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम सेकंड इक्वेशन में n की वैल्यू डाल देंगे। So when we put n over here, here also and here also, and we will try to calculate v. So this mg, v मैक्सिमम क्यों लिखा हमने? बिकॉज वी हमने लिमिटिंग केस लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एफ एस है दैट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एफ एस जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन एफ एस मैक्सिमम जो है वो कांस्टेंट है। सो एफ एस मैक्सिमम जब रखेंगे तो हमारे पास वी मैक्सिमम ही आएगा। ठीक है, सो ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस वी विल गेट वी मैक्सिमम म्यू एस प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड जस्ट चेक इट वंस। कुछ नहीं किया है, बस वेरिएबल्स को अरेंज किया है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को अरेंज करके वी हैव कैलकुलेटेड वी मैक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, सो दिस ये वाला जो एक्सप्रेशन है दैट इज फॉर द वी मैक्स। दैट मीन्स the velocity of that car on a banked road, it should always be either less than or equal to this value to provide to avoid any kind of accident. Okay, now when we will compare the v maximum value for this banked road and we compare the v maximum for the flat road, so what we will observe here is that v maximum जो कि बैंक रोड के लिए आएगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन v maximum for the flat road. What does this mean? This simply means कि if we have a like if we are driving on a banked road, then the chances of accidents are lesser. Why? Because then v maximum is like v maximum is more, right? And so therefore we are free to go to higher velocities on a banked road and accidents will not be there. But if we are going to the maximum, like, if we are going to that velocities, higher velocities on a flatter road, then the chances of accidents are more. That is why, like in the hilly areas, you must have noticed, like it does not seem because this banking angle, it's very less. It cannot be more. Just for this calculation purposes, I have shown it to be such a larger theta, but actually this angle is very less. And in the hilly areas, mostly banked roads are made to prevent these accidents and all. Because where the people, because the hilly areas you have seen, no, there are circular roads. Circular roads are there when you go up the hill. So that's why the banked roads are made there to prevent the accidents. Now, another point to be noticed here is that when we put mu s is equals to 0 in this last expression, the final expression, so this is one thing that you should notice. Then you should notice is that this mu s is equals to 0, we will get some value of v which will be under root rg tan theta.
Okay, so what does this mean? Mu s is equals to 0 simply means that there is no frictional force. मतलब mu s 0 मतलब coefficient of friction is 0. मतलब there is no frictional force acting, and no frictional force is needed to provide the centripetal force. So, if we are driving, like if the velocity value is exactly at this value, then there are more chances of wear and tear in the tires. Okay, so the tires they may be affected, they may be damaged. There are more chances of damage in that case because there is no frictional force, right? So the surfaces would be very rough. Okay, so this is the condition for no frictional force. Now, for the velocities which are less than v naught. Now, the third point to be noted is for the velocities which are less than this v naught velocity, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, जब हमने ये वाला डायग्राम अभी फिगर देखा था, इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो दैट वाज हियर, राइट, टुवर्ड्स लाइक डाउनवर्ड्स, राइट. व्हेन v is v naught, जो fs लगेगा ना, that would be upwards, that is up the slope. And in this case में the car can be parked only if mu s is greater than or equal to tan theta. मतलब ये कंडीशन कहाँ से आई? स्प्लिटिंग से कि अगर कार को पार करना है मतलब वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी हमारी जीरो है, दैट मीन्स कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है ओनली देन हम लोग कार को पार कर सकते हैं उस बैंक्ड रोड पे. अदरवाइज ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुई तो हमारी जो कार है वो नीचे की तरफ स्लिप हो सकती है. ठीक है, तो ये चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सी, mu s is a constant value. ठीक है, that's a value that depends only on the material. ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, अगेन थीटा भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वो तो रोड का थीटा है, लाइक द बैंक रोड का थीटा है ना, वो भी हम थोड़ी बना रहे हैं. सो दीज वैल्यूज दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. जब actually when banked roads are being constructed, then the people they have to actually see so many conditions to, like there are so many conditions they should be followed, otherwise the accidents, many things they can lead to the serious accidents there. So this is the condition that will make that shows that you can park your car there. Okay, otherwise it will slip down. Okay, so these four facts you must remember. Now we will please see some one question because not much time is left, and then we'll discuss more questions related to friction in the next class. So theoretically speaking, we have covered all the concepts, but we have not covered much of the many of the questions, right? So friction, the questions related to friction and all, and the complex questions related to momentum conservation, they are left, and so I will try to cover them up in the next class. So in the next class, what we will actually do is, कि, like we'll see a proper way of doing the numerical problems, because we cannot jump into doing, because see there are many complex problems in this chapter. So there's a proper way, there's a proper methodology. So there are many steps. We'll discuss stepwise methodology that we have to follow when we are doing such problems. Okay, so it will make your task easier, make the solution of those problems easier. So we'll discuss them in the next class. That's all for today. Thank you.